वेलकम बैक टू गुड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं ऑटो स्केलिंग मैनेज डिस्टेंस ग्रुप्स विद कस्टम मेट्रिक्स। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब, देन ओपन द क्लाउड कंसोल इन इनकॉग्निटो विंडो। क्लिक आई अंडरस्टैंड, click agree and continue. Remove the tutorial, come back here onto the task one. First we have to create a bucket in the cloud storage. Search for bucket, click on it, click create bucket. Now for the bucket name it has to be unique, so you can just simply copy your project ID, paste it here, which is unique. So then add dash bucket. This is your bucket ID. Copy this. You have to keep everything else default, but as we can see, we have to confirm that public access will be prevented after we click create. Here it is. Now I click confirm. It is created. Click check my progress. Copy this. Now this is a command to be run in Cloud Shell. So activate Cloud Shell using this icon. Click continue. Click authorize. Next, paste the command here. अब हम बैकस्पेस करेंगे, इसे रिमूव करके इसकी जगह पर हमारा जो बकेट था हम उसे पेस्ट करेंगे, दैट इज दिस, हिट एंटर। देन नेक्स्ट ऑन टू द टास्क 2 वी हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस टेम्पलेट। सो उसके लिए हमें इधर से इसे मिनिमाइज करना है क्लाउड शेल को, देन लुक फॉर इंस्टेंस टेम्पलेट, क्लिक ऑन इट, क्लिक क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट। यहाँ हमें इंस्टेंस टेम्पलेट का नेम ये सेलेक्ट करना है एंड सेट द लोकेशन एज ग्लोबल। देन हमें मेटा डेटा में जाकर इन दोनों को ऐड करना है। सो उसके लिए हम यहाँ वापस आएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके मैनेजमेंट में जाएंगे, देन मेटा डेटा के नीचे हमें ऐड आइटम दिखेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे की और वैल्यू दिख रहे हैं, तो हमें इन दोनों को इनपुट करना है। सबसे पहले की है हमारी स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूआरएल एंड उसकी हमारी वैल्यू है ये। तो यहाँ पे बकेट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इधर से लेकर इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक पूरा हटाकर यहाँ पे अपना बकेट नेम डालना है। ओके, तो कॉपी दिस, वैल्यू 1 यहाँ हम डालेंगे, इस जगह को रिमूव करेंगे एंड देन इसकी जगह पर प्रोजेक्ट आईडी डैश बकेट, देन ऐड आइटम, देन अपना नेक्स्ट की ऐड करेंगे जीसीएस बकेट एंड उसकी वैल्यू। और यहाँ भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, ऐड योर प्रोजेक्ट आईडी डैश बकेट, देन क्लिक क्रिएट। It is completed. Come back here, click check my progress. On to the task 3, we have to create an instance group. So उसके लिए हम यहाँ वापस आएंगे, स्क्रॉल डाउन, ये रहा इंस्टेंस ग्रुप, हमें इस पर क्लिक करना है, क्लिक क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप,
और यहाँ पे इंस्टेंस ग्रुप का नाम ये होगा, सो कॉपी दिस, रिप्लेस इट, बैक हियर। लोकेशन के लिए सिंगल जोन यूज करना है, और इंस्टेंस टेम्पलेट में हम वो यूज करेंगे जो हमने जस्ट क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया ऑटो स्केलिंग इंस्टेंस 1। सो इस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें लोकेशन में सिंगल जोन सेलेक्ट करना है। So for my lab, it is US Central 1 and US Central 1C. For your lab, it could be something different. So make sure to cross check that. Set the auto scaling mode to off and do not auto scale. All right. Go advanced configuration. Okay, so यहाँ पे नहीं है, ये रहा auto scaling. Configure auto scaling पे करने के बाद हमें इसे ऑफ कर देना है. Then click create. इसके क्रिएट होने का हम वेट करेंगे. जब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है तो हमें यहाँ वापस आना है. क्लिक चेक माई प्रोग्रेस. इट इज completed. Now next, on to the task 6. हमें इंस्टेंस ग्रुप पे जाना है. मतलब हम ऑलरेडी इंस्टेंस ग्रुप पे हैं, सो इस पे हम क्लिक करेंगे. क्लिक एडिट. देन हमें यहाँ बोला गया है कि ऑटो स्केलिंग ऑफ जो था हमें अब उसे ऑन करना है. सो इधर आकर यहाँ पे ग्रुप साइज एंड ऑटो स्केलिंग में आप देख सकते हैं ऑटो स्केलिंग ऑफ है. इसे हम कर देंगे ऑन. ऐड एंड रिमूव इंस्टेंसेस टू ग्रुप. द नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 एंड मैक्सिमम 3 होने चाहिए. अब हमें ऐड अ सिग्नल मेट्रिक का यूज करना है यहाँ पे. Signal type should be cloud monitoring metric. Configure, select a metric. Then हमें VM instance में और custom metrics में जाना है. Click VM instances, custom metrics, then click on this, click apply. Now utilization target should be 150 and utilization target type should be gauge. So click select. Now click save. Is completed. Click check my progress. Now task 7 is to watch the instance group perform auto scaling. Not really necessary. And the lab is complete. So congratulations, this lab is now complete. You can simply end this lab. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such amazing videos.